यस गाइज, आज हम लोग पढ़ने वाले ECG विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। सो हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये एक्चुअली एक ग्राफ होता है जो आपने मूवीज़ में देखा होगा। इस तरीके का हार्ट बीट शो होता है, और अगर ये स्ट्रेट हो जाए तो वी कंसिडर कि बंदा मर चुका है। ठीक है, इट्स अ डेथ अगर ये स्ट्रेट हो जाए तो। बट अगर ये ग्राफ इस तरीके का फ्लक्चुएशन शो कर रहा है, दैट मीन्स यू आर अलाइव, राइट। और ये क्या है? ये एक्चुअली आपके हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। सो हार्ट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस ग्राफ। नाउ as I told you, it's an activity which is very electrical. और यहाँ पे ये जो ग्राफ है, एक्चुअली इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। दिस ग्राफ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, बट जो डिवाइस इसको जनरेट करती है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। सो ECG, if the G stand for graph, that means we are talking about the device, machine that generate this graph which is called gram. Okay, so we will see what is this graph represents. If I just zoom one graph and I will explain you what does this represent. Okay, so let's check it out. Then it goes to here. एट्रियल सिस्टोल। जब एट्रियल का कॉन्ट्रैक्शन होता है उस समय जो एनर्जी जनरेट होती है उसको हम एट्रियल सिस्टोल कहते हैं। इसके बाद एक स्ट्रेट लाइन जाता है, दैट मीन्स अभी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, और फिर एक बड़ा सा ग्राफ बनता है लाइक दिस। इसको हम यहाँ पे नाम देंगे Q, R और S। सो QRS कॉम्प्लेक्स और QRS वेव, अब कुछ भी कह सकते हैं। सो QRS वेव रिप्रेजेंट कर रही है वेंट्रिकुलर सिस्टोल को। यहाँ पे एट्रियल डायस्टोल रिप्रेजेंट नहीं हो पाता है इस ग्राफ में। या यू कैन, QRS वेव रिप्रेजेंट्स वेंट्रिकुलर सिस्टोल। Then again you see a straight line, and after that again a small wave forms, and that straight line like this. So this is your one wave. Here it is called T wave. So T wave represents gents ventricle diastole. Ventricular diastole. Now see, the diastole and systole are also called polarization or repolarization. So when I say diastole, diastole means relaxation. So it can also be called as repolarization. The systole is also mean depolarization. So we can either say that P wave represents atrial depolarization. We can also say QRS wave represents ventricular depolarization, and T wave represents ventricular diastole or ventricular repolarization. The atrial diastole get hidden by the QRS wave because it's a very short duration, so we cannot capture the atrial diastole over here, but we can capture the QRS wave, that is ventricular systole. We can write over here only atrial or you can say it is get masked by QRS wave, or you can also write masked by QRS wave. Yes, so that's what happened. Repolarization again means diastolic phase. So
atrial diastolic phase is not being shown in this wave. ECG. Electrocardiogram. Okay. So please like and subscribe the channel. For any doubt, go ahead and ask in the comment box, and in the next session you will find the PYQ based on this topic of this AWES exam. Thank you for joining and thank you for watching.